Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alikum. Welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy. I'm Muhammad Shahid and today we are going to discuss 3 dialogues of HSK1 standard textbook lesson number 5. The name of the lesson is 他女儿今年20岁. मेरा नाम मोहम्मद शाहिद और आज हम HSK1 के सबक नंबर 5 की 3 मकाल में पढ़ेंगे और सबक का नाम है 他女儿今年20岁. उसकी बेटी इस साल 20 साल की है या उसकी बेटी की उम्र 20 साल है या उसकी बेटी 20 साल की है. So this is the name of the lesson that his daughter, her daughter is 20 years old this year, or her daughter is 20 years old. So we are going to talk about it in the dialogue. The dialogue number first of lesson number 5 in HSK1 standard textbook starts from here. 在学校, 学校 means school. 在, it means in and it means at. Like it means both of the preposition in Chinese language, but here it means in the school. 学校 कहते हैं school को. School में person A is asking a question from person B, as it is the format of the book that they have represented these dialogues with A and B, and the dialogues are between two people, A and B. So person A is asking a question. I have written 2 words over here. If you can see, one is ni and one is nin. Ni is used to say you in Chinese, and nin is also used to say you in Chinese, but one is a polite way of saying you to someone like who is elder than you, or out of respect, your boss or someone. तो जो है ये 2 अल्फाज है. एक है नी, जिस तरह हम उर्दू ज़बान में तुम कहते हैं, और एक है नीन, जिस तरह हम उर्दू ज़बान में आप कहते हैं. यानी इज़्ज़त के लिए, एहतराम की वजह से आप किसी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपसे बड़ा है, या यानी आपसे उम्र में बड़ा है, या आपसे जो है वो स्टेटस में बड़ा है, बॉस है आपका या कोई भी, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो I have told you the difference between these two, that one is a polite way of saying you and one is just addressing someone who you feel that you are you can address them by saying you in this way. Okay, and one is a bit polite. So I'll first pronounce it with ni. So 你家有几口人？你家有几口人？ ni means you. Ja actually means home. Okay, but here it means family. Here jia means family. Yo means to have. जिया का मतलब है घर आम अल्फाज में, लेकिन यहाँ पर जिया का मतलब है ख़ानदान. यो मीन्स है, यानी हैव. जी खौरन, जी दिस वर्ड, दिस. हाउ मैनी, कितने. खो, the meaning of खो is mouth. There is an interesting story behind this word. It is a major word for counting the people of a family. How many, कितने. खो का अपना मतलब है मुंह, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है. वो कहानी क्या है थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. ये दरअसल इस्तेमाल होता है लोगों को गिनने के लिए, ख़ानदान के लोगों को गिनने के लिए इस्तेमाल होता है. चीनी ज़बान में जब भी आप किसी चीज़ को या लोगों को गिनते हैं तो उसके लिए आप एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको चीनी ज़बान में मेजर वर्ड कहते हैं. देयर इज़ अ वर्ड यूज्ड इन चाइनीज़ लैंग्वेज इफ़ यू आर काउंटिंग समथिंग और इफ़ यू आर काउंटिंग पीपल. So you just need to use a word which is known as measure word to count that specific thing. Okay, so Ko has an interesting story. The story is that when China was struggling and there were very limited opportunities for earning bread for the people of the family, so they usually ask each other that how many mouths are there in your family to feed. ओके, चीन में जब गुर्बत थी, जब एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे, जब सख्त वक्त था उन पर, और जो है
मुश्किल था कि वो अपने ख़ानदान वालों के लिए जो है उनको रोटी खिला सके। तो ये एक दूसरे से पूछते थे कि घर में कितने अफराद हैं, यानी कितने मुंह है जिनको तुम खिला सकते हो। तो इस लिहाज से वो खौ का इस्तेमाल करते थे गिनती के लिए कि घर में कितने लोग हैं। So that is the story behind this. I hope that it is very clear now that why Chinese people use this khao with G and run. Okay, when it was hard for them to earn bread for their family, so they used that how many mouth are there in your family that you are feeding. Okay, run means people. So how many people are there in your family? And if I pronounce it with the polite way of saying 您家有几口人? 您家有几口人? Okay? 您家有几口人? तुम्हारे घर में या तुम्हारे ख़ानदान में कितने अफराद मौजूद है, कितने अफराद है, या आपके ख़ानदान में कितने अफराद है। अगर आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं नीन का, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं, और अगर आप नी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप तुम कह रहे हैं। तो तुम्हारे या आपके ख़ानदान में कितने अफराद मौजूद है, या आपके घर में कितने लोग हैं। अगर हम जिया को, यानी जिया जो है, इसको अगर हम घर कहते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं। सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? पर्सन बी इज़ हैविंग अ रिप्लाई फॉर दिस, एंड द रिप्लाई इज़ 我家有三口人。我家有三口人。Okay, I'll just write this. San means three, तीन. 我 means 我家 means my home. 有 have. San three. Khao is a major word used for counting the people of the family. Ren means people. So 我家有三口人。我家 means मेरे ख़ानदान में, यो है सान तीन, खो लोगों को गिनने के लिए, ख़ानदान के लोगों को गिनने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खो। रन लोग, मेरे ख़ानदान में तीन लोग हैं, या मेरे घर में तीन लोग हैं। देयर आर थ्री पीपल इन माई फैमिली. ओके, दिस इज़ इनफ फॉर of explanation for this dialogue. Now we are proceeding towards the next dialogue. Dialogue number 2. It starts from 在办公室，在 in 办公室 office. 办公室 means office. Okay, office in English, and in Urdu we can say दफ्तर में. दफ्तर में 在办公室. Okay, so again I have used these two. There in the book there is no nin. Okay, there's no nin, they have just used ni. Okay, so I will first pronounce it with ni. 你女儿几岁了？你女儿几岁了？您女儿几岁了？女儿 means daughter. बेटी को 女儿 कहते हैं. 女儿. It is a double dotted U with third tone mark. So it is a bit pronounced as like we. And if you are squeezing your mouth, then you can correctly pronounce it. 你女儿几岁了? Okay, how old is your daughter? How old is your daughter? 岁 means age. 岁. Le can be used at the end of a Chinese sentence to indicate a change or the occurrence of a new situation. Like in this sentence, we can see that it is 您女儿几岁了？您女儿几岁了？ So previously, or previous year, or a day before, the daughter of the person could have of the age 19 years, but right now she's 20 years old. So like situation has been changed, so that is why they used la at the end of a Chinese sentence. I hope this is clear now, that why we used la at the end of a Chinese sentence, though it has other uses as well, because one of the use of la is to indicate the completion of an action. Like we say this sentence in Chinese language, 你
你吃你吃了吗？你吃了吗？ Have you eaten? 你吃了吗? क्या तुमने खाना खाया है? So la here is indicating the completion of the action of eating. ये खाना ख़त्म होने ख़त्म करने की तरफ इशारा कर रहा है. So one of the use of this la is this. That it indicate the completion of an action, and here it indicate the a change, okay, change in age, okay. So that is why they used it at the end of this sentence. Let me tell you the meaning of ji. This word ji, how many, usually used to ask a number less than 10. So this sentence, in this sentence you can see that 你有几个韩语老师？你有几个韩语老师？ How many Chinese teachers do you have? So it is indicating the number less than 10. आपकी कितनी चीनी असातिज़ा है? So probably their number would not be more than 10. So that is why this question can be asked, that a number, if it is less than 10, then you can use this interrogative pronoun ji, just like in this case of asking about age. 你女儿今年几岁了？你女儿今年几岁了？ How old is your daughter? So we used the ji interrogative pronoun, okay. Next to it is next to this is 多大 okay. So 多大 means you can see this 多大. So this is an interrogative phrase, and it is used to ask about one's age. किसी की उम्र के बारे में पूछने के लिए ये phrase इस्तेमाल होता है. And the sentence is in front of you. 你女儿今年多大了? You can also say this way, and I have also discussed other ways of saying, or other ways of asking about age in Chinese language. Some are polite, some are impolite, some are natural, some are native, and some are not used in modern use now, but I have discussed all of those ways of asking age in Chinese language. मैंने वो तमाम जो है जुमले इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हो आप पूछ सकते हैं किसी से उसकी उम्र के बारे में. यहाँ पर तोता एक प्रेज़ है जिसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आप किसी की उम्र के बारे में उससे पूछ सके. सो नी न्यू और जिनियन तोताला, इस साल आपकी बेटी की उम्र कितनी है, या इस साल आपकी बेटी जो है कितनी बड़ी है. ठीक है, तो तोता तो मीन्स मैनी और मच, एंड ता मीन्स बिग. But when they combine, then they are used, these two are used, I mean, like as a praise, interrogative praise, they are used to ask about someone's age. Okay, now here you can see the different ways of asking age in Chinese. First one, this sentence is used to ask about the age of people who are having an age of 65 or above 65. So you can say 请问您今年高寿? 请问您今年高寿? Simply you can say how old are you, like the meaning of the sentence is how old are you. 请问 means excuse me. 您今年高寿, how old are you. 高寿 means longevity or long life. ये इस जुमले का मतलब भी यही है कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन ये जुमला आप उम्र पूछने के लिए उन लोगों के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं जो जिनकी उम्र है जो वो 65 साल की हो या इससे ज़्यादा हो. तो ये एक ऐसा तरीक़ा है कि जो है वो मतलब एहतरामन आप उनका जो उनकी उम्र है वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि छिंगवान माफ़ कीजिए निंचिनियन गाओशो, आपकी उम्र क्या है. गाओशो का मतलब है लंबी ज़िंदगी. ओके, now we are proceeding towards the next way of asking age, and this is the sentence. The sentence is 请问您今年贵庚?
请问您今年贵庚 माफ कीजिए or excuse me, how old are you this year? Guegang means honorable age, मुअज़्ज़ज़ उम्र। तो अगर हम लफ्ज़ी इसका तर्जुमा करें तो माफ़ कीजिए इस साल आपकी मुअज़्ज़ज़ उम्र क्या है? A Chinese friend told me that this is not a natural way of asking the age of someone, and in modern Chinese usage, you will not find this sentence. Like you will not find Chinese people using this sentence to ask someone's age. But though it is used or it was used in Chinese language, so I have brought it for you. And this one is 请问您今年贵庚 चीनी लोग इसको ज़्यादा अभी इस्तेमाल नहीं करते, एक चीनी दोस्त ने बताया। तो लेकिन इस्तेमाल हुआ करता था, तो इसलिए जो लोग this sentence can be used to ask the age of those people who are between 40 to 64. उन लोगों की उम्र पूछने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी उम्र 40 से 64 साल के बीच में हो. So how old are you this year? Or what is your honorable age this year? You can also, if you want the literal translation of this sentence, so it can be, what is your honorable age this year? Okay, excuse me, what is your honorable age this year? Or simply you can say, how old are you this year? And one other, we have used these two sentences in our today's lecture, and this can be asked from people about their age who are lower than the age of 40. So you can say 你几岁了? Okay, I'll try to write the opinion of this for you. 你几岁了? 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 Okay, how old are you? Or 你多大了? 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 So people who are lower than the age of 40, you can use these two methods about asking their age. Okay, जिन लोगों की उम्र 40 साल से कम है, आप ये दोनों जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे उम्र पूछने के लिए कि 你几岁了? Third tone rule applies here. We can change this 你 into second tone. 你几岁了? 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 How old are you? तुम्हारी उम्र कितनी है या कितने साल के हो? 你多大了? So तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने बड़े हो. तो means many और ता means बड़ा. So तुम कितने बड़े हो, ठीक है. So इसी तरीके से हम मुख्तलिफ जुमलों का इस्तेमाल करते हुए उम्र के बारे में पूछ सकते हैं. I hope that this would have been a new information for you which is not discussed in the book though. मेरे ख्याल में ये आपके लिए एक नई मालूमात होगी क्योंकि ये किताब में नहीं दी गई है. So how old is your daughter? तुम्हारी या आपकी बेटी की उम्र क्या है? So तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? How old is your daughter? आपकी या तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है, ठीक है, कितनी है? So the answer of this one is 她今年4岁了. 她今年4岁了. Ta means she, 今年 this year, 4 means 4, 岁 means age. तो पहले उसकी उम्र कुछ और होती या कुछ और थी, अभी कुछ और है, तो इसलिए ये ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चीनी जुमलों में. था मीन्स वो, यानी वो लड़की या वो, यहाँ पे चूँकि 4 साल की तरफ इशारा है तो हम लड़की कह सकते हैं. था जिनियन वो इस साल, स 4 16 उम्र, तो वो 4 साल की है, वो 4 साल की है, या इस साल उसकी उम्र 4 साल है, इस तरह भी कह सकते हैं. शी इज़ 4 years old. स मीन्स 4. ओके, 4 उर्दू में हम इसको 4 कह सकते हैं, 4. Okay, so this was enough about this dialogue. Proceeding towards the next dialogue. Okay, so the next dialogue is 在办公室 in the office, दफ्तर में. 李老师多大了? How old is teacher Li? Li is the name of the teacher
and she's a female teacher because the personal pronoun is used in the next dialogues, and it is used for female for saying she. Okay, Lao Shu means teacher. Tuota, how big. So ustani ली की उम्र कितनी है. ली ustani, लाओशो का मतलब है उस्तानी और या उस्ताद, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ इसके लिए आगे इस्तेमाल होगा ये वाला लफ्ज़ जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ कि ये आप जहन में याद रखें कि जब ये था इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब है कि फ़ीमेल. ओके, सो चूँकि अगले मुकालमों में यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो हम यहाँ से ये अख़ज़ करते हैं कि उस्तानी है ये. सो ली लाओशो तो ताला, कितनी बड़ी है वो. ठीक है, इसका मतलब तो ये निकलता है. लेकिन यहाँ पर जब तो ताला इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र कितनी है, जब आप किसी की उम्र के बारे में पूछते हैं. सो द आंसर फॉर दिस इज़ था जिनियन 50岁了, 50岁了, था जिनियन 50岁了. She is 50 years old और शी इज़ 50 years old दिस ईयर. इस साल उनकी उम्र 50 साल है, या उनकी या उसकी उम्र 50 साल है. ठीक है, था मीन्स शी, जिनियन दिस ईयर, 50, 50 मीन्स 50, 岁了, 岁 मीन्स एज and you can say years. So she is 50 years old this year. इस साल उनकी उम्र 50 साल है. So this is about teacher Lee. The age of teacher Lee is 50 this year. And the next dialogue is था न्यूआरना, था न्यूआरना, और उसकी बेटी की यानी उसकी उम्र कितनी है. In the next lecture probably I'll tell you about the use of this particle, that why it is used at the end of a Chinese sentence. One of the use of this particle is that it basically tells you like you are questioning a previous situation when you are using this in a dialogue. Like previously it was asked that what is the age of teacher Lee, and now the like person A was asking the age of teacher Lee previously. यानी शुरू की जो सूरत हाल थी वो ये थी कि जो शख्स ए है वो ये सवाल पूछ रहा था शख्स बी से कि उस्तानी ली की उम्र कितनी है. तो जब उसने बताई दूसरे डायलॉग में यानी बी की रिस्पांस में ये था कि उसकी उम्र 50 साल है, तो उसने उसी सिचुएशन को लेके अगला जो सवाल करना चाहा कि अच्छा तुम्हारी तो इतनी है और उसके बारे में क्या, यानी उसकी कितनी है या उसकी, ठीक है, उसकी बेटी की. ओके, था न्यूआरना. व्हाट अबाउट हर डॉटर? So I will tell you the use of this word probably in the next lecture. What about her daughter? और उसकी बेटी की यानी उसकी उम्र कितनी है. So now we are going to answer this. Person B is replying to this question. 她女儿今年20岁. 她女儿今年20岁. Her daughter is 20 or her daughter is 20 this year. Okay, so इस साल उसकी बेटी की उम्र 20 साल है या उसकी बेटी की उम्र 20 साल है. था she न्यूआर, था न्यूआर her daughter. You can also say था the न्यूआर her daughter, but it might be more native, or you can also omit the word, this word, this word. So था द न्यूआर यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है. था और न्यूआर के बीच में यह एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो कि पोजीशन यानी मलकियत ज़ाहिर करता है किसी के ऊपर. तो मतलब माँ के लिए बेटी जो है उसका जो रिश्ता है उसी को ज़ाहिर करने के लिए द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हटा दिया गया है क्योंकि उनका रिश्ता जो है वो क्लोज है, इस वजह से. सो था न्यूआर हर डॉटर जिनियन दिस ईयर 20 岁, 20 years old. ओके, उसकी बेटी की उम्र इस साल 20 साल है या उसकी बेटी की उम्र 20 साल है.
This was all for today. I hope that you would have enjoyed this lecture. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर चीनी ज़बान के पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि अगर कोई सीखने में दिलचस्पी रखता हो और वो जो है वो एकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते और उनकी जो है वो दिलचस्पी ज़्यादा हो चीनी ज़बान सीखने में, तो ये उनके लिए एक किस्म की एक गाइडेंस जो है, एक रास्ता उनके लिए मुहैया कर देगा कि वो अपनी बेसिक्स जो है वो डेवलप कर लेंगे और आगे चल के जब वो कोई कोर्स में इनरोल हो जाएंगे तो उनके लिए ये मुफीद साबित होंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि हम और भी मज़ीद दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। 再见。